Is it better now? Slightly, not best, but better. Let me see. So yeah, let's start with a new topic, which is your accounts receivable in FAR 3. Let me open your backup material and mm, inventory, intangibles, PND. Okay, let me share my screen and let's start with your FAR Uh, 3, which is the for accounts receivable. for Hmm. the journal entry, I needed to discuss. We can do it after this, after the session. Yeah, let's do maybe at a weekend. Let's focus to close couple of topics. So we have a few more new topics for exam this week. So target is to get AR today done and then inventory to be done in next two session, and maybe Friday after the session we can discuss all the query plus any exam questions you have. Okay, now before we move to the accounts receivable, I am asking you to prepare a T-shape account. So go to your Google Sheet. You have accounts receivable. Use any of the blank items available, and then all the transactions you have here, beginning balance, sales, collections, all those things. Do a T format posting for them. Why? Concepts are important before we deep dive into the कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द अकाउंटिंग. सो एक बार ये इंफॉर्मेशन के बेस पे एक बार टी शिप के अकाउंट का पोस्टिंग कर लो. Tak, AR वाली sheet पे. सॉरी. Where in Go to the the Google sheet here and use any of the blank cells. You can do it bottom, you can do it right hand side, wherever you want. can you open the slide? What does converted to notes mean? So basically, when there is accounts receivable, either they will give you a cash or a bank check, or they may give you a promissory note. They say that on a so and so date, I will promise to pay you this amount, and they sign a legal contract, which is called a promissory note. That promissory note, you can go to a bank or you can go to a third party and encash it. So it's just like a cash, but not a hard cash, but a cash in the form of promissory note. You are done, then एक बार बताना. Yes. Okay, let me quickly check. So accounts receivable, debit balance 90,000 looks okay. Sales increase your AR, that's okay. You got a cash, notes, and a bad debt.
and this gives you a 50,000. That's perfect. So your T concepts are perfect. So we are good to start. So it's a very small topic. So what we are going to do, we'll understand there are three slides for this chapter completely from the slides. Then we go to your backer material and look at all the sections, all the examples, and maybe by a couple of hours, we should be able to wrap the entire topic. Now, again, before we move forward, this is something should have been there in your graduation. If I say 2 by 10 net 30 is equal to 2%, what is the interpretation of this particular statement? This much of the statement is given: 2 by 10 net 30 is equal to 2%. What is the interpretation of this particular line? Uh, our terms are 30 days, and Mhm. if they pay within 10 days, they get a 2% discount. Exactly, perfect. So 2 by 10 net 30 means your standard payment terms are 30 days, but we offer you a 2% discount if you pay within the 10 days period. So that's the first concept. That's the second concept sticked. Third concept before we start the chapter. What is the difference between trade receivables, accounts receivable, or accrued revenue? Now you have done revenue recognition topic, so you should be aware. So my question is, what is the difference between accounts receivable versus your unbilled revenue or accrued revenue? So, unbilled revenue is revenue that we have earned but not invoiced. Perfect. And what is accrued? What is accounts receivable? Revenue that we have recognized. No, revenue तो आपने recognize कर लिया ना. For example, let's say Accounts example. receivable is when the customer owes us cash. Exactly. Accounts receivable is the invoicing activity, invoicing and collection activity. So let's take our example. I am taking advance money from you. So let's say I'm taking INR 30K from you at the start of the month. Now, on the first day of the month, I have not given any services to you. So what is my entry? First, I'm going to send you the invoice. So my entry is accounts receivable debit to deferred revenue, 30,000. Once you pay me the cash, my entry is cash account debited to accounts receivable. And let's say then every month, let's say for the first month, I have delivered the services to you. So now my entry is deferred revenue account debited to revenue. Now, what is important to understand, since we have learned the revenue recognition concepts, invoicing accounts receivable is an activity to send the invoice and collect the cash. There may be a revenue, there may not be a revenue. Revenue depends on the delivery of the services when control is transferred. Whereas your invoicing and your collection depend on the contract terms with the customer. Like our example, I said I want advance money, then only I'll start teaching you. So on the day one, I have not given any services to you, so I cannot recognize any revenue. So, but in order to collect the money, I have to send you the invoice. So when I generate the invoice, the customer owes the money, it is accounts receivable. So revenue may be recognized, may not be recognized. But when revenue will be recognized, when I start teaching you, when I start delivering these services to you. So now, is it all clear? What is the difference between? No. Can you repeat what you said for when is revenue? So when revenue You is tell me, when recognized. is revenue recognized? आप बताओ No, कब होता है revenue नहीं, recognized? no. So when you provide the services, so when you provide the services, will you then do the cash and accounts receivable entry, or will you then do the deferred revenue or revenue entry? आप बताओ क्या entry होगी? So we have the same scenario. Let me just remove this for a time being. Let's take our scenario. I'm taking 30K advance from you. I'm collecting the cash, and let's say my delivery of the services are completed at the end of the first month. So beginning of the month में क्या entries होगी and end of the month में क्या entries होगी? So over to you.
Deferred revenue and accrued revenue are the same thing. Sorry, deferred revenue and Accrued revenue. you can create, but ultimately they offset with each other. So if you again recall the revenue recognition concepts, we understand कि हमने एक बार classification किया था, तब हमने net किया था. If you remember this particular point, that you offset the contract assets and contract liabilities. How do I differentiate between those two? Sorry, how do Deferred. you differentiate means? How do I differentiate between the deferred and accrued? So आप बताओ सबसे पहले deferred revenue कब create होता है? And this is where The concepts are important. When deferred def revenue gets deferred triggered. revenue is when the customer has paid us more than we actually earn. So we have a Perfect. deferred revenue. So if in our situation, if I'm collecting the 30,000 in advance from you, so I have collected the money. So do I need to use deferred revenue or do I need to use accrued revenue? Deferred. Deferred, exactly. Now suppose hypothetically we have a different payment terms. I will first deliver you the services, and then once your CPS syllabus is over by end of 3 months, then only I will invoice you and then only you will pay me. So now will you use deferred revenue or accrued revenue? Accrued. Exactly. So if you are able to invoice and collect in advance before services are delivered, so you use a deferred revenue always. If you are delivering the services first and then invoicing and collecting, then you have to use unbilled or accrued revenue. तो आप एंट्रीज बनाओ. चलो आपकी स्क्रीन पे 3 ट्रांजैक्शन है. फर्स्ट, लेट्स से 1st of May I have raised the invoice. 2nd of May you have paid me, and 30th of May the services are delivered. So तीनों डेट पे क्या क्या जर्नल एंट्रीज में पास करूंगा. ओवर टू यू. You're paying. What's the second entry? So 1st of May I am raising you the invoice. On 2nd of May you are paying cash to me, and 30th of April is the date when services are delivered. So the first one is not cash, so it's you're invoicing. आप बताओ. First one I have sent invoice to you. Invoice. So invoice रेज होता है तो क्या होता है? Accounts receivable. Done. So your first entry you have put accounts receivable debit to deferred revenue credit. Second, cash account to accounts receivable. Third, deferred revenue to revenue. So perfect. Now are you all clear कि accounts receivable is just an activity to raise the invoice and collect the cash. Raise the invoice, collect the cash. Revenue all depends when goods and services are transferred. Is this concept clear to you? Yes. चलिए. So our base is clear. You know when accounts receivable is created. You know T-shaped ledger posting, and you can interpret 2 by 10 net 30 concepts. So let's go in detail of the chapter trade receivables, accounts receivable. So what is accounts receivable? When you raise the invoice to the customer, the accounts receivable is created. Accounts receivable is presented in the balance sheet as a current asset, net of any bad debt provisions, which you expect customer will not pay.
So generally accounts receivable are presented at a net realizable value. Now let's deep dive into the concept gross method versus net method. And I'm using here few slides. So let's say one is a gross method and one is a net method. Let's say there is a one company, X company, has sold the goods to you, Mr. Saad, let's say for $10,000. Now the payment terms are net 30, but 2 by 10, that is a 2% discount if you pay within the 10 days. Now, from the company's point of view, company has a two options to record this particular transaction. Option number one, company assumes that you are not going to pay within 10 days, but you are going to pay only within the standard 30 days. So initial transaction, let's say the company has recorded the first entry, accounts receivable debit, and I'm straight away putting to deferred revenue credit. And then second entry is deferred revenue debit to revenue credit because goods are delivered to you. And now company is thinking that you are not going to pay within 10 days. You will not take the benefit of the with the 2% discount. So company can record the entire sale at a $10,000 and company can record the entire revenue at a $10,000. Now, let's say there are two possibilities. Option number one, Saad has made a payment on day 25. That means you have not taken a 2% discount benefit, you have paid a full cash. So your entry is cash account debited to accounts receivable 10,000. Or let's say there is a second option that Saad has made a payment on day 2. That means now you have taken a 2% discount benefit. So you are going to pay company only 98% of the money because 2% are a discount. However, you need to close the accounts receivable for the full amount which is open in the books. So remaining a difference, which is a discount given by company to you for the early payment of 2%, will be debited to your revenue account, and this is most important. Traditionally, people used to record this as an expense, but since revenue recognition accounting standard, we understand if any amount which is paid back to the customer by whatever name you say, it can be a discount, it can be cashback, it can be penalty, it can be volume discount, any name, it's a reduction of the revenue. So let's say company record accounts receivable at $10,000 for a gross method. And if you avail the discount, then whatever is the discount given by the company to you, it's a debit to revenue. So that is your method number one, which is a gross revenue method. There can be a second scenario, which is a net method. Now, let's say under a net method, company assumes that Saad is going to take the advantage of 2% discount for sure. So, in at inception only, company records 98% of the revenue. They assume that 2% will be anyways taken as a discount by you. So, initially only you record accounts receivable with 9800 to deferred revenue and second entry deferred revenue to revenue. So, I put a net entry accounts receivable debit to revenue credit. Now let's say your option number one, Saad pays on day 3. That means Saad is taking a 2% of discount and he is only paying 9800. Your entry is cash account debited to accounts receivable 9800. All good, transactions are closed. But let's say Saad pays on day 29. That means now Saad is going to make a payment of full $10,000. He cannot get a discount of 2% because he is not paying within a 10 days criteria. So your entry is cash account debited, which is 10,000 full. Your accounts receivable is only having a 9,800, so that is only the amount which can get closed. And now you true up your revenue again because you have not taken advantage of the discount and company has received a full cash. So whenever there is a gross method or a net method, if there is a change in the methodology, any discount given or discount not given will be either debited or credited to the revenue accounts only and not the discount account.
Whether you want to use a gross method or a net method, that's a discretion of the company. Accounting standard is not giving any mandatory choice. Company can decide whether they want to follow gross or a net. Real life, you always go for a gross method because it's a more safe method to use rather than directly using a net method. But दोनों method are acceptable practices. It's a They first concept for the day. कोई query हो तो बताओ. they cannot use both. They have to choose one, right? हाँ, बोथ कैसे कर सकते हैं? आप एक ही बार इनवॉइस रेस करोगे ना कस्टमर को, आप एक ही बार अकाउंटिंग करोगे. Yeah, I think university, the accounting I was learning, we were basically it was dependent on the customer. If we expect them to pay the discount, then we will record it on the net. If Exactly. So for example, Saad, I expect he will take discount. So for Saad, I'm using a net method. Let's say X Limited has sent a goods to Chintan. For Chintan, they are not expecting I will take a discount. So for me, they are using a gross method. So customer to customer, they can change. But for a one customer, there can be only one method. okay, चलिए, let's come to your book now. Let's quickly आप एक बार देख लो accounts receivable, your section 1. The format, it's a T-shaped format in a vertical format. एक बार आप देख लो उसे. And there is a gross method, net method in section 1.2, and then there is a example number 1. सो ओवर टू यू. अप टू एग्जांपल नंबर 1 एक बार 5 मिनट लगाओ, यहाँ तक का पूरा पीडीएफ गो थ्रू कर लो. कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछो. दिस इज द सेम एग्जांपल जहां पर एक सोल्यूशन दिया है ग्रॉस मेथड से, एक सोल्यूशन दिया है नेट मेथड से. इजी टू अंडरस्टैंड. कहीं पे अटको तो मेरे को पूछ लो. ओवर टू यू फॉर 5 मिनट्स.
In their example, they are not debiting revenue, they're using the account sales discount taken. So Uh, that is no longer is now acceptable. यहाँ पर अगर आप ऊपर भी पढ़ोगे सेल्स डिस्काउंट टेकन नाम भले यूज किया है, दिस इज गोइंग टू योर रेवेन्यू अकाउंट. अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा, Contra revenue. sales discount is actually clubbed to your revenue account on the credit side of the P&L. It doesn't go on the debit side. So that is the important catch. आप नाम फिर revenue use करो या आप कोई और नाम भी use करो, but ultimately it has to reduce your revenue. So sales discount is nothing but sales minus sales discount. Okay, I'm done. I'm done. चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स. लेट्स गो बैक टू द स्लाइड. एग्जांपल में कोई भी डाउट नहीं है ना, बिकॉज दिस टॉपिक विल बी ओवर. हम लोग फिर उसको रिट्रीट नहीं कर पाएंगे. Mm, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. एक छोटा सा पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड uh, डिस्काउंट का मतलब क्या so, होता है? sorry, just one thing. So sales discount not taken is as well not used now. सॉरी, कम अगेन. Sales discount not taken. हाँ, वो भी अब नहीं अब इस्तेमाल होगा, रेवेन्यू होगा. एग्जैक्टली, इट गोज टू द रेवेन्यू अकाउंट्स. सो दिस इज व्हाई कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, कि अगर वो आपको एग्जाम में पूछ लेंगे कि सेल्स डिस्काउंट टेकन और नॉट टेकन, वेयर इट शुड गो टू द इनकम स्टेटमेंट. आपको पता होना चाहिए इट शुड गो ऑन द क्रेडिट साइड ओनली, नॉट ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड चला जाएगा तो वो एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा. Sure. चलिए, नाउ ट्रेड डिस्काउंट, अनदर स्मॉल कॉन्सेप्ट. Basically, these are the discounts which are agreed before a deal is entered with the customer. So for example, आप जाते हो कोई शॉप में and you see a price which is $100. आप bargain करते हो and you are agreeing to sell the particular item at $80. So before contract is started, whatever discounts are negotiated, it is called a trade discount. Trade discount की कभी कोई accounting होती नहीं है. By default, every value after a trade discount is entered into a contract and that value is invoiced to a customer. ऊपर जो हमने देखा था, that's a cash discount, which is a incentive to pay the early cash, which is after a contract is signed. So for example, in our case, $100 is a base price, $20 is a trade discount. तो contract में value जाएगी $80 की, invoice बनेगा $80 का. And let's say now there is a 10% discount for the early payment. So $8 is either a discount taken, discount not taken. So a small concept कि हमेशा हमेशा आपको figures after trade discount ही consider करनी है. Example number 2. So for the early days, we'll still do the entries, right? For the early days, it is not called a trade discount. It is called a cash discount. What do they mean by taking 2%? 2% का मतलब ये होता है कि आपने एक ट्रेड डिस्काउंट के बाद एक फिगर को अग्री की. ट्रेड डिस्काउंट मीन्स वॉट एवर नेगोशिएशन हैपन्स ऑन द टेबल बिफोर अ डील इज लॉक. अब मान लो आप Amazon प्राइम का मेंबरशिप लेना चाहते हो. Amazon प्राइम मेंबरशिप इज $1000, लेकिन आपने नेगोशिएट किया सेल्स टीम के साथ एंड दे अग्री टू गिव यू फॉर $500. सो जब $500 का आपको डिस्काउंट मिला, इट्स अ ट्रेड डिस्काउंट, इट इज नोवेयर अकाउंटेड फॉर. आपको स्ट्रेट अवे इनवॉइस मिलेगा $500 का, विच इज आफ्टर डिस्काउंट. एंड देन यू हैव अ ऑप्शन कि अगर आप वो इनवॉइस 10 दिन में पे करते हो, यू स्टिल हैव अ $50 का मोर डिस्काउंट. सो दैट $50 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर द अर्ली पेमेंट इज कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट और अ डिस्काउंट फॉर पेइंग अर्ली इन द डेज. अगर आपने 10 दिन में पेमेंट कर दिया, यू आर सपोज टू पे ओनली 450. If you don't pay within 10 days, then you have to pay the entire $500. So whatever example we saw on the previous sheet, this all are the figures after a trade discount is agreed.
Trade discount is basically all the negotiations off the table. Nothing is officially recorded. So in their example too, Hmm. they say trade discounts of 40% and 10%. So I'll So assume yes, that the 10% is a cash discount, or so let's read. So Kathleen and Brown sells the coats with a list price of $1,000. They are sold to a store for a list price minus trade discount of 40% and 10%. तो स्ट्रेट अवे 40% तो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया. उसके बाद आपकी वैल्यू आ गई 60,000. उसके ऊपर भी आपने 10% का एक्स्ट्रा ट्रेड डिस्काउंट नेगोशिएट किया. तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी प्राइस जाएगी? 54,000. इनवॉइस कितनी वैल्यू का बनेगा? 54,000. 40% आप जनरली सबको डिस्काउंट देते हो. ये पर्टिकुलर केस में आपने कस्टमर को और 10% रेट डिस्काउंट दिया. सो वॉट एवर डिस्काउंट यू गिव बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीड, ऑल इज अ ट्रेड डिस्काउंट. तो पहले आपने कस्टमर को ऑफर दिया $60,000 का. कस्टमर सेड आई नीड अ मोर 10% डिस्काउंट. आपने और 6,000 का डिस्काउंट दिया. नाउ यू अग्री एट अ 54,000. सो 54,000 से इनवॉइस रेज होगा. 54,000 इज योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. 54,000 का आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे. So your base price for the entire deal is now $54,000. okay. Clear है? कोई doubt, question? No. चलिए, let's come back to the slide. Now, when you raise a accounts receivable, company को पता है कि एक एक मिनट देना, just hold on for a minute. Okay. So now when a company raise the accounts receivable, let's say they have 1,000 customers and total $1 million of accounts receivable, they know that not all the customers are going to pay them. There will be some customers who will default, and that default is a bad debt expense. Now, remember the base sessions जब हम matching principle कर रहे थे, we understand why a bad debt expense is recorded in the year in which revenue is recognized. And if in the future year bad debt loss happens, that is adjusted directly against the provision. So in this chapter, we are directly learning at an advanced level that how a bad debt provisions needs to be calculated. So bad debt provision का दूसरा नाम है allowance. Another name is CECL. CECL का full form है current expected credit loss. तीनों चीजों का एक ही मतलब होता है. Whether someone says bad debt provision, someone says allowance, someone says CECL. All three things are one meaning. It means the accounts receivable which are expected not to pay. अब आपके पास एक मेथड अलाउड है which is a gap compliant, which is a CECL method, जहां पर आपको based on the accounts receivable aging आपको फैक्टर करना पड़ता है कि कितना पैसा नहीं मिलेगा. There is one more method which is called a direct write-off method. Now, direct write-off method is not allowed under US GAAP accounting, but it is allowed for the IRS tax purpose. डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में क्या होता है? You straight away write off the accounts receivable when actual bad debt happened, no provisions at all created. Suppose year one you did a sales of $10,000, आपका accounts receivable है $10,000 का. You expect कि एक कस्टमर जो है $100 का वो पे नहीं करेगा. But if you are using a direct write-off method, you will not create any provision in year one. Let's say year two customer did not pay, no provision. Year three, finally customer is bankrupt, he says I will not pay you anything. तो आप year three में जाके सीधा write off का entry pass करोगे, which is called a direct write off method. No provisions are created, not allowed under US GAAP, but it is allowed for the US tax purpose. तो जब हम लोग रेगुलेशन में जाएंगे वो टाइम पे ये चीज को हम डिटेल में समझेंगे that how direct write off method impacts. अभी के लिए if in MCQ it comes, what is the not non-gap method? It's a direct write off method, not allowed, should never be used for the books of account purpose.
अब CCL क्या बोलता है, विच इज योर करंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बैड डेट अलाउंस मेथड। ये बोलता है कि आप चेक करो कि अगर कस्टमर 0 to 30 डेज बकेट में है तो कितना परसेंट आपको लॉस हो सकता है। देन आप चेक करो अगर वो 31 to 60 डेज में है तो कितना लॉस हो सकता है, एंड सो ऑन। जनरल नॉलेज क्या बोलता है, हमारी कॉमन सेंस की जितना अकाउंट्स रिसीवेबल पुराना होगा, द एजिंग इज हायर, द रिस्क इज हायर, बिकॉज कस्टमर इफ नॉट पेइंग टुडे इट्स ओके टू ही विल पे नेक्स्ट वीक। Customer is not paid for 30 days, okay, he will pay by 45 days. But if customer is not paying for 180 days, 240 days, or 300 days, 1 year, it's a big risk that why customer is not paying. So as the aging bucket increases, your bad debt provision percentages increases. Bad debt percentages आप कैसे निकालते हो? So you check your historical trend of your company, that on an average आपको कितना loss होता है, plus you adjust for the future economic condition. For example, let's say आपका कोई customer ईरान में है. Now in Iran, you understand कि customer on an average 2% pay नहीं करते हैं. But now war is going on. So now you think that there may be a chance that if not 2%, this year maybe 4% customers will not pay. It's a judgment call. There is no mathematical formula. और let's say generally आपका, आप यूएस की कंपनी हो, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल यूएस में है, you assume only 5% will not pay. But let's say a COVID outbreak comes up in the US market and a lot of businesses are going bankrupt. Now you feel because of COVID 5% तो पे नहीं करेंगे, but there is a chance additional 12% people will also not pay. So your bad debt provision for that year becomes the 17%. थोड़े और कॉन्सेप्ट्स में आपको याद कराता हूं जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। चेंज इन बैड डेट प्रोविजन परसेंटेज इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इट मींस ओनली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कोई भी चेंज अगर होता है प्रीवियस पीरियड का, फिर भी आप लोगे उसको प्रोस्पेक्टिव ईयर्स में ओनली। Now let's understand a one example from the book how a CCL method is used. बहुत ही simple है. Then I'm giving you a one question to practice, and this is only a key concept in this entire accounts receivable topic. So let's go to your backer and let's understand the first one, which is a direct write-off method. So direct write-off method, under this method, bad debt is recognizing when it becomes uncollectible. This is not allowed under the gap because it does not match the revenue with the expense. Now, this is important word, and this is why we did all the demo session. You to understand what is the meaning of the match word. It means it violates the matching principle. डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ऑन डिसम्बर ईयर 1 आपने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड किया $10,000 का। एट ईयर 1 यू नो कि शायद ये कस्टमर पे नहीं करेगा, बट यू स्टिल नॉट रिकॉर्डेड एनी प्रोविजन। इन जुलाई 1 ईयर 2 कस्टमर ने डिसाइड किया आपको इन्फॉर्म करने का कि ही विल नॉट पे। सो डायरेक्टली ऑन जुलाई 1 ईयर 2 योर एंट्री विल बी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल। क्या चेंजेस है? दो इंपॉर्टेंट चेंजेस। योर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज जुलाई 1 ईयर 2। Second, instead of using a provision account here, you are straight away using a expense account. This expense account goes to the income statement. जब हम लोग अभी दूसरा मेथड करेंगे, we will understand always a write-offs are routed through a bad debt provision account and provision is a balance sheet account. तो दो key concepts, direct method not allowed under US GAAP, but if at all you are using that, it violates the matching principle, and bad debt expense, which is an income statement account, that is getting hit rather than a bad debt provision account. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक बार बुक से वापस देखते हैं, विच इज अ CCL मॉडल। आई एम नॉट कमिंग ऑन द थियरी, उसको बाद में पढ़ते हैं। देन उसके बाद हमें चीजें इजीली समझ में आएगी। आई एम इवन स्कीपिंग एग्जांपल नंबर 4, इट्स अ सिंपल एग्जांपल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल पे आते हैं, विच इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 2। Let's see, you have a beginning balance in the bad debt provision account. Bad debt provision is your liability, so you have $1,000 of balance. Let's prepare a T-shape account here. So let's create a bad debt provision account,
and you have a beginning balance. It's a liability account, so it's a credit balance, which is a $1,000. Now, as per the analysis, what you understand, then there are certain Bad debt invoices which provision is a liability account. bad debt provision is a negative asset or a liability. Either you can show as a contra asset, which is a negative to accounts receivable, or you can present to the liability side. Okay. ऑल क्लियर? डाउट है उसमें कोई भी? So it will be credited. Yes, so opening balance is on a credit side. So this is the credit side. Okay, this is the debit side. Now, when your company saw you have a accounts receivable of 25,667, you do the aging buckets. आपको पता लगा $10,000 के जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो करंट बकेट में है. करंट बकेट का मतलब क्या होता है? विच आर नॉट ड्यू येट, मतलब विद इन द ड्यू डेट है. फॉर एग्जाम्पल, आपने उनको 30 डेज का टाइम दिया है, सो दिस आर द अकाउंट्स रिसीवेबल विद इन 30 डेज बकेट. देन यू हैव अ $6,600 का AR which is under 31 to 61 days bucket. Then you have a $5,000 ka accounts receivable in 61 to 90 days bucket. And then you have a $4,000 of accounts receivable which is more than 90 days. Now आपने percentages estimate किए, एग्जाम में आपको दे दिए जाएंगे just like we have in the example. कि current bucket में you have a 1% loss, 31 to 61 days में you have a 3% loss, 61 to 90 days में you have a 10% loss. And if accounts receivable are due more than 90 days, then you have a 20% loss. So accounts receivable balance into percentage gives you how much amount may not be collectible. So if you do a mathematics, $10,000 into 1%, $100, $6,000 into 3%, $200, $5,000 into 10%, $500, and $4,000 into 20%, $800. So now overall you assume that you by end of the year you need a bad debt provision of 16,800. So you want the closing balance to be 60. So closing balance to be 1,600. You have a bad debt balance of 1,000. It means there is a plug on the credit side. It means there is an increase in the liability, oblique increase in the allowance. By what amount? By $600. So $600 is the CECL expense, oblique bad debt expense for the current year. Now, what is the journal entry for bad debt provision? Now, this is important. Focus rakna. Journal entry for bad debt provision. We are in year 1. Your entry is bad debt expense account debit. So this goes to your P&L. To allowance for bad debt. Entry is $600. $600. What happens into your balance sheet? In your balance sheet, you have a accounts receivable. How much? 25,667 less allowance as a contra asset for $1,600, and net accounts receivable will be 24,067. Now, hypothetically, you have no business in year 2. Everything is done. You are closing down the business. When you go into a year 2, there is an actual loss of, let's say, $600. Let's say to actual loss of overall, let's say, $1,600. Whatever you provided, customer did not pay actually. Rest of the amount customer paid to you. So what is the entry? Cash account debited, accounts receivable. So accounts receivable has a balance of 25,667. Customers are paying how much? 25,667 minus 1,600 are written off. Now there is a difference. Now this difference will be adjusted against bad debt provision, which is your balance sheet account. So now what happens into your balance sheet in year 2? So this is my year 2 transaction. What happens in my year 2 balance sheet? My accounts receivable are now 0. My allowance now 0. Net AR is 0. Why my allowances become 0?
I have used my allowance account here. So for example, this is the bad debt provision account, and we are going into the year 2 now. So year 2, you have a beginning balance of 1600. You don't need any ending balance. Now this is the amount which is actually written off. So you can say either a negative difference on this side, or there is a difference on 1600 this side. So this is a liability debit balance. It means reversal of the liability. Here you have debited the bad debt provision account. So this is the effect, which is a bad debt written off in year 2, which are adjusted from the provision account directly. थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, I'll come back again. डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड जो अभी हमने देखी, व्हाट वी डिड, वी पोस्टेड द एंट्री डायरेक्टली टू बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट व्हेन राइट ऑफ हैपेंस. दिस इज अ P&L account. But here, when there is an actual write-off happened, we used a bad debt provision balance sheet account, which is your matching principle, जिसके ऊपर हमने 2-3 घंटे spend किए थे to understand the basic concepts that why revenue has to match to the expense. एक बार फिर से मैं explain करता हूँ कि हमने matching principle कैसे यूज किया. जो 1600 का डाउटफुल डेट हमने राइट ऑफ किया ईयर 2 में, ये इसका जो सेल्स था जिसकी वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट हुआ था, वो ईयर 1 में क्रिएट हुआ था. सो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक्सपेंस उस पीरियड में रिकॉर्ड करो जिस पीरियड में आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है. तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल जो राइट ऑफ ईयर 2 में भले हुआ, लेकिन इसने इनकम कब आपको जनरेट करके दी थी, इसने आपको इनकम जनरेट करके दी थी ईयर 1 में. तो आप ईयर 1 में P&L अकाउंट यूज करोगे, दैट इज अ प्रोविजन करते टाइम आप बैड डेट एक्सपेंस को हिट करोगे. बट व्हेन देयर इज अ एक्चुअल लॉस के टाइम पे आप सीधा का सीधा बैलेंस शीट अकाउंट यूज करोगे, एंड नथिंग इज गोइंग टू P&L, एंड दिस एंश्योर्स योर मैचिंग प्रिंसिपल इज 100% फॉलोड. एक बार सोल्यूशन देखते हैं. आई डोंट नो वेदर सोल्यूशन इज मैचिंग टू द बुक और नॉट. So 1600 है. So I think they have not given the values. So incremental entry is going to be $600 for the month. कोई भी क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन, हाउ द एंट्री इज रूटेड, या हमने कैसे प्रेजेंटेशन किया, ईयर 2 में क्या किया, एनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू नीड? Yes. Uh, so first, when you're making the provision in the first year, what would be the entry for that? ये रहा आपका एंट्री, बैड डेट And एक्सपेंस डेबिट टू अलाउंस फॉर बैड डेट. when in the bad debt provision account, you record the CECL expense. हाँ, Will तो आप there be इसको a CECL का नाम छोड़ दो ना, यहाँ बैड डेट एक्सपेंस लिख लो. CECL का मतलब बैड डेट ही होता है. CECL इज अ टेक्निकल वर्ड जो आप यूएस गैप IFRS में यूज करते हो. कॉमन लेमन टर्म्स में उसको बैड डेट ही बोलते हैं. पहले साल में प्रोविजन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? Bad debt expense and the allowance for bad debt is the entry written. तो एंट्री क्यों नहीं होगी, मैं वही पूछ रहा हूँ. अलाउंस अकाउंट इज अ बैड डेट प्रोविजन अकाउंट. सो इसको आप बैड डेट प्रोविजन बोलो या इसको बैड डेट प्रोविजन बोलो, अलाउंस और प्रोविजन एक ही होता है. आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है. Can you यू हैव write टू in अंडरस्टैंड. slash so that both names are there? Oh. मैं तो तीसरा नाम बोलता हूँ, CECL अलाउंस. एग्जाम में ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको बुक में जो नाम है वही नाम आएगा. आपको अकाउंट का नेचर समझना है. व्हेन यू से अ प्रोविजन, फिर आप बैड डेट प्रोविजन बोलो, अलाउंस बोलो, CECL प्रोविजन बोलो, CECL अलाउंस बोलो, सबका मतलब एक ही होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द अकाउंट एंड नॉट दी वर्ड. आपको याद नहीं रखना है, अदरवाइज अगर मैं आपको MCQ में कोई नाम ट्विक कर दूंगा तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर. CACL is bad debt expense. CECL expense is a bad debt expense. CECL provision is a bad debt provision. Okay. CECL को आप रिप्लेस करो बैड डेट से. एक्सपेंस और प्रोविजन तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर होगा ना. जैसे बैड डेट एक्सपेंस और बैड डेट प्रोविजन अलग अलग है, वैसे CECL एक्सपेंस और CECL प्रोविजन अलग अलग है. नाम है ना, एक एक को राम बुलाते हो, दूसरे को श्याम बुलाते हो, बंदा तो एक ही है ना.
याद रखने के लिए। आप ऐसे मत जाओ, दिस इज अ हॉरिबल वे टू लर्न। आप नाम मत याद रखो, अगर आपको कोई तीसरा चौथा नाम आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आप फिर छोड़ दोगे वो क्वेश्चन। एंड प्रोविजन फॉर CCL डेट, कौन सा अकाउंट हुआ वो? प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन। एग्जैक्टली, तो आप नेचर से अंडरस्टैंड करो ना, आप नाम पे क्यों जा रहे हो कि ये भी नाम हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। अगर वो एक्सपेंस अकाउंट है तो वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, P&L में जाएगा। अगर वो प्रोविजन अकाउंट है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। फिर आप उसको बैड डेट बोलो, ABC बोलो, PQR बोलो, कुछ भी बोलो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। And then in the second year, we are reversing the bad debt provision. सॉरी, मैं नहीं समझा, कम अगेन। Second year, we are reversing the bad debt provision. You are reversing or you are writing it off. Reversing is a okay word, not a bad word, but more technical pronunciation is you are writing off the accounts receivable now through the provision account. तो Okay. आपका पर्पस क्या था बैड डेट प्रोविजन बनाने का? कि फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है तो उसके लिए आज प्रोविजन करो। तो जब एक्चुअल में फ्यूचर में लॉस होगा, जब हुआ ईयर 2 में, तो आपने प्रोविजन अकाउंट से उसको एडजस्ट कर दिया। Okay. Okay. चलिए, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो आप आ जाओ टॉप पे एंड गो थ्रू द एग्जांपल नंबर 4। अमाउंट पहले डिटरमाइन करो एंड उसके बाद एंट्री भी डिटरमाइन करो। मेरे पास ये for the book has सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। book मेरी थोड़ी different है. नो, आई एम स्टिल नॉट एबल टू हियर यू। My book is a little different. Example 4, I can share. नो It's प्रॉब्लम, different. पहले आप ये स्क्रीन वाला सॉल्व करो, उसके बाद आपकी बुक वाला देखते हैं। आपने स्क्रीन वाला हटा दिया. Okay. सो ऑल क्लियर विद एग्जांपल 4? Yes. एंट्री क्लियर है, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट $600 विच इज द इंक्रीमेंटल वैल्यू। Yes. चलिए आ जाते हैं एक और छोटे से टॉपिक के ऊपर। नाउ व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न, आपने जो एंट्रीज पोस्ट की थी व्हेन यू आर डूइंग द सेल्स, आप एग्जैक्टली सेम एंट्रीज को रिवर्स करते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जांपल नंबर 3, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। For example, Jacobs Incorporation, they have sold a 500 goods to Bennett, who pays in cash. Your entry is cash account debit 500 to revenue account 500 because control is transferred. You can recognize the revenue. नाउ गुड्स का जो कॉस्ट था वो था 350। तो पहले आपकी कोई चीज इन्वेंट्री में पड़ी होगी, वो इन्वेंट्री आपने सोल्ड आउट की। इन्वेंट्री इज योर एसेट। इन्वेंट्री जब सोल्ड आउट की तो इन्वेंट्री कम होती है, सो यू क्रेडिट द इन्वेंट्री, यू डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय 350। और आपने ये ट्रांजेक्शन में $150 का प्रॉफिट अर्न किया। सो बेसिकली ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आपके पास एक इन्वेंट्री पड़ी थी $350 की, आपने वो $500 में सेल आउट की। You collect the cash. So your entry is cash to revenue $500. Second entry, cost of sales to inventory $350. Now let's say कि
चेकअप ने ये चीज रिजेक्ट कर दी कि क्वालिटी इज नॉट गुड एंड लेट्स रिजेक्ट, उसने सेल्स रिटर्न कर दिया. सो वॉट एवर एंट्री वी हैव डन, आइडियली इट शुड बी रिवर्स्ड फुल्ली. So what should be your entry? Your entry is going to be revenue account debited to cash 500, inventory account debited to cost of goods sold 350. Now this entry will hold good जब 100% of the goods are written. भाई साहब ने क्या किया है, 20% ऑफ द गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दी है. तो जितना रेवेन्यू था उसका 20% भी रिवर्स्ड. सो रेवेन्यू अकाउंट डेबिटेड टू कैश 100, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 350 का 20% विच इज 70. सेल्स रिटर्न अलाउंस इज क्लब टू योर रेवेन्यू अकाउंट ओनली. सो सिंपल एग्जांपल, नो नॉट मच ऑफ लॉजिक, बट है बुक में तो हमने कवर कर लिया, विच इज योर इलस्ट्रेशन 3. कोई भी क्वेश्चन इसमें? Why are they calling it an allowance? We haven't अगेन we already. मैं चीज बोल रहा हूँ, आप मेरे को चिंतन बोलो, आप मेरे को स्मिथ बोलो, आप मेरे को मोहम्मद बोलो, आप मेरे को कुछ भी बोलो, मैं हूं तो ट्यूटर, तो मैं ट्यूटर ही रहूंगा. या आप किसी को एक्स बोलो, वाई बोलो या जेड बोलो, अगर वो चीज जो है वो वही रहेगी, तो आप उसको सेल्स रिटर्न बोलो, आप उसको रेवेन्यू रिटर्न बोलो, आप उसको इनकम रिटर्न बोलो. वॉट एवर नेम यू यूज, दैट इज अप टू द बुक्स, दैट इज अप टू द पर्सन हु इज सेटिंग अप द मटीरियल. अगेन नॉमेनक्लेचर पे आप जाओ, आइदर अ पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल. तो साध है, चिंतन है, दे आर अ मेल. लेट्स से लीजा है, शी इज अ फीमेल. अब आप लीजा को आप लेट्स से कुछ और भी बोलोगे, फीमेल है तो वो फीमेल ही रहने वाली है, या मेल है तो वो मेल ही रहने वाला है. सो अगेन नाम पे मत जाओ. इफ यू आर गोइंग द अकाउंटिंग बाय रिमेम्बरिंग द नेम, देन यू आर इन अ हॉरिबल पोजीशन. एग्जाम में अगर ट्विक हो गया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट टॉस हो जाएंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, देखो, सेल्स रिटर्न इज अ कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट. बट अगेन गो फॉर द लॉजिक्स. मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ रेवेन्यू डेबिट, तो आंख बंद करके समझ लो वो रेवेन्यू डेबिट है. फिर यहाँ पर आप उसको कोई भी नाम से बुलाओ, इट डजेंट मैटर. और Mhm. ये तो आपका एनीवेज रेवेन्यू रिकग्निशन में कवर हो चुका है ना. कोई भी चीज आप कस्टमर को वापस देते हो, दैट्स अ रेवेन्यू डेबिट. फिर आप उसको कोई भी नाम से बुलाओ, तो कॉन्सेप्ट सब आपके क्लियर होने चाहिए. इफ नॉट तो आपका रेवेन्यू रिकग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी वीक है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा. चलिए आगे चले. Yes. Next small topic is subsequent collection of accounts which is already written off. So for example, in our example, थोड़ा आगे चलते हैं कि जो एक्चुअल लॉस हुआ था $1600 का, लेट से आउट ऑफ दिस $200 का जो कस्टमर था उसने ईयर 3 में आपको पेमेंट कर दिया. आपने तो राइट ऑफ करके आप भूल चुके थे कि ये कस्टमर पैसा नहीं देगा. नाउ कस्टमर कम्स बैक एंड वो आपको $200 का पेमेंट वापस कर रहा है. सो इफ यू कलेक्ट एनी डेट which was written off, then it has to be reversed in original way only. सो आपने ये राइट ऑफ कहाँ से किया था, बैड डेट प्रोविजन अकाउंट से किया था, तो आप उसको राइट बैक भी सेम वे में करोगे. तो आपको पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, आपने राइट ऑफ कहाँ से किया था, बैड डेट प्रोविजन बैलेंस शीट अकाउंट से. सो यू आर गोइंग टू राइट बैक अगेन टू द सेम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट प्रोविजन अकाउंट $200. सो व्हाट दे आर सेइंग कि डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में आप क्या करते हो, आप सीधा इनकम स्टेटमेंट को हिट करते हो. सो यहाँ पर आपकी एंट्री स्ट्रेट अवे हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट और अनकलेक्टेबल अकाउंट्स रिकवर्ड. ये अनकलेक्टेबल अकाउंट्स रिकवर्ड भी जाता है आपका बैड डेट एक्सपेंस में ग्रुप होता है. अगर आपने CECL मेथड यूज की है विच इज अलाउंस मेथड, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट नॉक ऑफ हो गया. योर नेट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू Slow, प्रोविजन. slow. Okay. हेलो, Yes. बोलिए, आई डिडंट गेट यू. Can you repeat by the allowance method? व्हेन कैश इज रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, जब आपने बैड डेट ऑलरेडी बुक कर दिया था, उसके बाद कस्टमर आपको पैसा देता है. सो यू हैव टू रिवर्स द एंट्री द सेम वे जो आपने बैड डेट राइट ऑफ किया था. जब आपने बैड डेट राइट ऑफ किया था ईयर 2 में, यू यूज्ड अ बैड डेट प्रोविजन अकाउंट. सो व्हेन यू कलेक्ट द मनी सब्सिक्वेंटली,
then also a bad debt provision account is only used. Your entry is cash account debited to bad debt provision account. बुक में अगर देखते हैं तो द नेट एंट्री इज द सेम विच इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट प्रोविजन अकाउंट. दूसरा नाम अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल, तीसरा नाम सीसीएल अलाउंस, चौथा नाम अगर इसमें चाहिए तो डाउटफुल डेट प्रोविजन अकाउंट. बट अल्टीमेटली योर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट प्रोविजन अकाउंट. यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हुआ, यहाँ पर क्रेडिट हुआ. दिस इज नेट टू जीरो, दिस डेबिट क्रेडिट नॉक्ड ऑफ. योर नेट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड to allowance for doubtful debt account. This is under the allowance method. अगर आपने डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज की है, नॉट अलाउड अंडर द गैप, बट स्टिल अगर आपने यूज की है, देन योर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनकलेक्टेबल अकाउंट्स रिकवर्ड. This uncollectible accounts recovered basically reverses the bad debt expense which you have recorded initially. So if you see the direct write off method, आप एंट्री करते हो bad debt expense account debit to accounts receivable. अगर आपको पैसा सब्सिक्वेंटली मिलता है, then your entry is cash account debited to bad debt expense account. क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक सारे? Okay. चलिए अब लास्ट टॉपिक पे जाता है विच इज अ मोर थियोरेटिकल टॉपिक. एंट्रीज अब हम करेंगे इसमें. सो विल फिगर इट आउट हाउ टू डू दी एंट्रीज. आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल है उनको आप प्लेज कर सकते हो, उनको आप फैक्टर कर सकते हो. जब आप फैक्टर करते हो तो इट कुड बी विदाउट रिकॉर्ड्स और इट कुड बी विद रिकॉर्ड्स. तो पहले तीनों चीजों को समझते हैं टेक्निकलिटी में एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री. प्लेज का मतलब क्या होता है कि सपोज आपको बैंक से एक लोन चाहिए. नाउ यू गो टू द बैंक और आपने बैंक को बोला कि मुझे $5,000 का लोन दो. बैंक ने बोला आप मुझे कुछ सिक्योरिटीज दो, गारंटी रखो. तो आपने आपके अकाउंट्स रिसीवेबल को प्लेज कर दिया. नाउ दे आर स्टिल योर अकाउंट्स रिसीवेबल, लेकिन जब भी कस्टमर आपको पैसा देगा वो पैसा यूज होगा लोन को रीपे करने के लिए. सो इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप होम लोन लेते हो तो बैंक आपसे प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाता है. आप कार लोन लेते हो बैंक आपसे कार मॉर्गेज करवाता है. सो इट्स द सेम वे यू आर मॉर्गेजिंग, यू आर प्लेजिंग योर अकाउंट्स रिसीवेबल. जब जब कस्टमर आपको पैसा देगा आपके अकाउंट्स रिसीवेबल का, दैट मनी विल बी यूज टू रीपे द बैंक लोन. नाउ कंपनी स्टिल रिटेन्स द टाइटल टू द अकाउंट्स रिसीवेबल. आपने सेल नहीं किए हैं आपके अकाउंट्स रिसीवेबल, दे आर स्टिल योर बैलेंस शीट, दे आर स्टिल योर करंट असेट. आपने जस्ट मॉर्गेज कर दिया है बैंक को. जो भी कस्टमर पैसा करेगा वो पैसा यूज होगा टू रीपे द लोन. ओनली आपको डिस्क्लोजर करना है, आपको अकाउंटिंग में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है. सो सपोज लेट्स draw the few more examples. आपकी बैलेंस शीट में there is a current asset and under the current asset you have accounts receivable. Let's say $10,000. Out of this $10,000 आपने $3,000 के accounts receivable को pledge कर दिया. So only by way of notes to accounts you will just say that $3,000 के जो accounts receivable है they are pledged with, let's say, Bank of America for a loan of $2,800 repayable over next 12 months. So it's just a disclosure. Asset still is yours, accounts receivable still yours, पैसा आप ही कलेक्ट करोगे. इट्स जस्ट आपने बैंक को सिक्योरिटी दे दी कि कल उठ के अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं अपनी लोन में तो जो भी पैसा मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल देने वाला है वो पैसा डायरेक्टली आप कलेक्ट कर सकते हो. सो दैट इज ऑल अबाउट द प्लेजिंग. क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजिंग? Okay. ठीक है. द नेक्स्ट इज आप फैक्टर कर सकते हो. फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप आपके अकाउंट्स रिसीवेबल को सेल आउट कर देते हो. सो यू कैन फैक्टर योर अकाउंट्स रिसीवेबल. सो फैक्टरिंग सबसे पहले तो हम लोग क्यों करते हैं? लेट्स से आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल है बैलेंस शीट में विच आर $10,000 एंड दिस आर ड्यू आफ्टर 90 days. अब कस्टमर आपको पैसा देने वाला है 90 डेज के बाद, लेकिन आपको आज पैसों की जरूरत है. सो व्हाट यू डू, यू गो टू द बैंक और यू गो टू एनी फैक्टर एजेंसी और आप बोलते हो कि मुझे मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल सेल करना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुझे सेल करना है? हम फैक्टर को बोलते हैं कि यू गिव मी द मनी टुडे
and then later on you collect the money from the accounts receivable. So basically I'm selling my accounts receivable and collecting the cash today. फैक्टर क्या बोलेगा कि मेरा क्या फायदा? So I will do a one thing. I will pay you $9,000 today, and I will collect $10,000 from the customer. So the gap of $1,000 is my income. सो ऑब्वियसली वो बिजनेस कर रहा है, सो उसने आपको ऑफर रखी कि वो आपके $10,000 के अकाउंट्स रिसीवेबल खरीद तो लेगा, लेकिन आपको $9,000 ही पे करेगा. नाउ लेट से आपको पैसा चाहिए, यू अग्री. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? यू गेट द कैश ऑफ $9,000. What you have closed, your accounts receivable are closed, they are the asset now, no longer they are your asset, so it's credited. The $1,000, it's a commission expense or a factor expense. So this is called a factor, or your accounts receivable is sold to a factor. सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग? Yes. ठीक है. अब इसमें दो चीजें हो सकती है. जब फैक्टर गया, लेट्स से फैक्टर गया 10,000, फैक्टर गया टू कलेक्ट द $10,000 फ्रॉम द कस्टमर. ऑप्शन नंबर वन, all paid. So all ends well, everything is good, factor is happy, you are happy, your customers are happy, everything is good. But let's say option number two, only $9,800 of the customers paid. $2,000, $200 के कस्टमर जो थे वो डिफॉल्ट कर गए. दैट मीन्स जब फैक्टर गया पैसा लेने के लिए $10,000, तो 9,800 वो कलेक्ट कर पाया, बट $200 डिफॉल्ट हो गया. नाउ ही कॉल्ड मी, फैक्टर ने मुझे कॉल किया कि भाई $200 इज डिफॉल्ट. तो मैंने बोला कि व्हाट शुड आई डू, मेरा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है. इफ आई कैन रिस्पॉन्स इन दैट वे, उसका मतलब है बैड डेट लॉस इज अज्यूम्ड बाय फैक्टर, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग. इट मीन्स इफ बैड डेट हैपन्स, फैक्टर कैन नॉट come back and collect the money from me. अब लॉजिकली सोचो कि मैं गया फैक्टर के पास, मैंने बोला $10,000 का अकाउंट्स रिसीवेबल मुझे सेल करना है. अब मैं बोलता हूँ कि मुझे नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टर करना है बॉस. मतलब अगर कल को 10,000 में से आपको कुछ भी ना मिले तो मेरे पास मत आना, दिस इज अ नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टर. तो फैक्टर क्या बोलेगा, ठीक है, माई रिस्क इज मोर हियर, सो आई एम गोइंग टू चार्ज अ हायर कमीशन हियर. व्हाई? क्योंकि कल को उठ के हो सकता है कि मैं एक भी डॉलर ना कमाऊं, मुझे कुछ भी ना मिले, $10,000 सारे डिफॉल्ट कर जाए, तो मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूं. सो आई कैन ओनली पे यू $8,000 हियर, एंड $2,000 इज माई कमीशन. So if there is a non-recourse factor, it means a factor cannot come back in the event of the bad debt loss. So generally the commission expenses are higher, and it is called a non-recourse factor. So without recourse, matlab factor cannot come back. It's a final sale. Factor assumes all the collection risk. What is the entry? You debit cash account, you debit your expenses, and you debit your accounts receivable. And accounts receivable are no longer part of your balance sheet because आपने accounts receivable को sell out कर दिया है. All clear with the second table, factoring without recourse? Yes. चलिए, थर्ड है कि फैक्टर बोलेगा कि नहीं बॉस, नॉट पॉसिबल, कि बैड डेट हुआ तो भाई आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू एंड कलेक्ट द मनी फ्रॉम यू. So it is called a factoring with recourse. With recourse का मतलब if bad debt happens, then factor will come back to you and collect the money. So generally the risk is lower. So generally the commission is lower. Now let's say what happens कि आप गए आपके 10,000 के accounts receivable लेकर, and factor ने बोला I am going to do a with recourse. So we said, okay, commission आप कम करो. So what factor is saying, I'm giving you 9,000 cash. My commission expenses are $1,000 to my accounts receivable, which is $10,000.
नाउ फैक्टर ने क्या बोला कि ऐसा हो सकता है कि 2% of the people will not pay. So I'm going to come back to you and recollect $200 from you. So हम लोग क्या बोल रहे हैं कि we need to create a one provision which is my commission expense, or let's say which is your bad debt expense, $200 to provision for factors payable. So this is the $200 which we are estimating that certain customers out of $10,000 will not pay to the factor, and factor will come back to you and he will collect the money from you. So this is generally called a tentative sale. So if with recourse, or let's put like this. So if it's a non-recourse, it is called a final sale. You have no responsibility for non-collection. Everything is done and dusted. But if it's with recourse, it is called a tentative sale, and you still have a responsibility in the event customer defaults. So just a theoretical topic, आपको पता होना चाहिए conceptually that what is happening into a non-recourse and what is happening into a recourse one. तो factoring with recourse देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि factor can return for the bad debts, अगर होती है तो आपके पास वो वापस आ सकता है for uncollectible amounts. आप इसको सेल ट्रीट कर सकते हो कब, जब इफ यू कैन एस्टिमेट अ लॉस. So if you are able to estimate that $200 will not pay, but rest of the people will pay, so you can record this particular transaction and create a provision of $200. But if you feel that no, we don't know how much people will default, then you can treat the money received from the factor as a loan. So this is the option one of the accounting. If you feel this is a sale and we can reasonably estimate how much bad debt expense will happen. If you cannot reasonably estimate, then whatever money is received from the factor is called a loan. So cash account debited to a loan payable account. Let's say you initially received a $9,000. Now, when settlement happens after 3 months, you understand that only 9,800 worth of the customer have paid. So you reverse your loan payable account with 9,000. You have a commission expense account, which is 800. You have a bad debt expense, which is $200 who are defaulting people, to your accounts receivable, which is your $10,000. So you treat the transaction as a loan. Here you treat the transaction as a sale of accounts receivable. So the condition says if you can reasonably estimate that how much will be your bad debt expense, and treat the transaction as a sale of accounts receivable. If you cannot, then treat the money received today from the factor as a loan, and once the transactions are squared off, you can close the accounts receivable, close the loan account. So all clear with the concept of what is Uh, factoring and what is pledging? I don't get the entry for option two, the second one. चलिए, आपको पैसा किसी ने दे दिया, उसको क्या बोलोगे एडवांस मिला तो? No, the second फैक्टर ने आपको one. पैसा दे दिया है, आपको ये पैसा फ्यूचर में या तो कैश में वापस करना है या आपको आपकी कोई एसेट उसको वापस देनी है, तो वो आपकी लोन लायबिलिटी हो गई. Yes. सो व्हाट वी हैव डन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिटेड. ठीक है, यू आर यू कंफर्टेबल विद दिस एंट्री? Yeah, I'm asking for the second one. चलिए, अब लास्ट में आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 90 डेज, आपको पता लग गया कि फैक्टर्स, आपके पास जो अकाउंट्स रिसीवेबल थे 10,000 के, उसमें से 9,800 हैव पेड एंड 200 हैव डिफॉल्टेड. नाउ यहाँ पर कहना है कि हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे कि कितना बैड डेट होगा, बट नाउ वी हैव द एक्चुअल डिटेल्स अवेलेबल, हाउ मच हैव पेड एंड हाउ मच हैव डिफॉल्टेड. So what we are saying that let's close your accounts receivable of $10,000 now. आपको कैश तो ऑलरेडी फैक्टर दे चुका है, so let's close the liability account also. तो फैक्टर आपको 9,800 के अकाउंट्स रिसीवेबल के सामने पैसा कितना मिला, 9,000 का. सो डिफरेंस ऑफ 9,800 माइनस 9,000, दिस इज योर फैक्टरिंग एक्सपेंस. कि इतना चार्ज हुआ कमीशन बिकॉज फैक्टर ने मुझे जल्दी पैसा दे दिया था.
200 is my bad debt loss because this much of the amount customer has not paid, and it's my loss because it's a recourse sale. ये फैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर पैसा कलेक्ट नहीं हुआ. I have to bear the loss. And two accounts receivable, which is $10,000. Clear with the entry? Oh, will we have another entry for to pay the factor? Or रीपे क्यों करना है फैक्टर को? आपने आपके अकाउंट्स रिसीवेबल तो दे दिया ना. जो आपको कैश कहाँ मिली है कस्टमर से, कस्टमर ने सारी कैश फैक्टर को पे कर दी ना. no, for the 200 that they didn't get. 200 इज योर लॉस. आप फैक्टर को पे नहीं करोगे. फैक्टर को 9,800 मिल गए. फैक्टर इज हैप्पी. फैक्टर को प्रॉब्लम कब होता? जब फैक्टर पहले बोलता कि भाई 200 रुपए मैं बाद में रिकवर करूंगा. यहाँ पर तो हिट मैं ले रहा हूँ ना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. आई एम नॉट सेइंग माई कमीशन एक्सपेंसेस आर 1,000. आई एम सेइंग माई कमीशन एक्सपेंस आर 9,800. सो वी हैव अग्रीड अ डील कि बैड डेट एक्सपेंस होगा तो वो मैं बेयर कर लूंगा, एंड द चैप्टर ओवर्स देयर. मैं ऐसा क्लॉज ऐड करता हूँ कि आई विल पे यू फुल $10,000 अगर कस्टमर शॉर्ट पे करता है, एंड आई एम गोइंग टू कॉम्पनसेट फॉर यू. देन यस, देयर विल बी अ वन मोर एंट्री which is a liability account debited or a factor payable account debited to cash for $200. So it depends on the contractual condition then. Hmm. Clear है concept? What was your last point? लास्ट पॉइंट इज कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया कि जो बैड डेट एक्सपेंस है आई एम गोइंग टू पे यू इन कैश, तो 100% आपका एक और एंट्री यहाँ पर बनेगा विच इज फैक्टर्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर $200. लेकिन उसके लिए आपको पहले लायबिलिटी आपकी क्रिएट करनी पड़ेगी बुक्स में. Okay. Okay. ओके, सो आप आ जाइए आपकी बुक में. लेट्स सी वेयर वी एंडेड. Calculation of bad debt expense. I think this is pending. Yes. So over to you. आप example number 5 देखो. We have covered already, so it should be easy to walk. Entries देख लो example number 5 की. Then you are done. Go for a pledging. Pledging में दो topics है, with recourse and without recourse. And इतना टॉपिक होता है. देन आप बताओ, फिर हम लोग नोट्स रिसीवेबल पे बात करते हैं, एंड देन वी विल end the chapter and the date. So 10-15 Um, minutes over to you. in You can go. in my book, there's a whole section called reconciliation of subledger to general ledger. That should not be a part of the accounts receivable. That's the general topic. अब Still, एक बार मेरे को भेज देना. आई हैव टू सी. मेरे बैकर के पीडीएफ में नहीं है, सो आई विल सी इट. सो अभी के लिए फोकस करते हैं यहाँ पर. गो थ्रू टिल दी नोट्स रिसीवेबल. उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं नोट्स रिसीवेबल पे. and example 5, uh, what did it say in yours? Uh, चलिए, ओवर yeah, टू यू. आई वांट म्यूट फॉर 10 मिनट्स. आप एग्जाम्पल 5 और फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट देख लो, और उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस करते हैं. calculation of bad debt expense and calculation of allowance for credit losses are same, right? यस, कैलकुलेशन ऑफ बैड डेट एक्सपेंस. Because it's a different example in my book. आप देख लो, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है एग्जाम्पल. सोल्यूशन की जरूरत नहीं है दिखने की. यू कैन प्रिपेयर योर ओन, और आप फिर मैच कर लो सोल्यूशन को. चलिए, आई सी यू इन 10 मिनट्स.
Actually, all clear with example 5? Any question, doubts? In without recourse, the entry they have. Uh, Well, no, example 5 is all sorted. uh, yes. Chaliye, let's go to the next section. Without recourse, yes. The due from factors. So that is what happens when factor is not paying you 100% cash upfront. So let's build our example. So when, let's say, a non-recourse, when you went to a factor, factor says I will give you $8,000 out of 10,000, 2,000 are my fees. But today I'm giving you a down payment of only $1,000. So I'm giving you a cash of $1,000 today. So then you have a due from factor, which is, let's say, after 15 days is going to pay you remaining 7,000. So you can add a one more account that today you get a 10% cash, remaining 90% factor will pay you after 15 days. So that's the your current asset, which is amount due from the factor. The line they have after the entry. So the entry to the asset account due from the factor represents the amount which is retained by the factor. So it's exactly same, right? Factor ने अभी 7,000 अपने पास retain किए हैं. He is not giving you right now. He can give you after 15 days, after 60 days, or let's say factor is saying it takes $6,500 now. The remaining $1,500 I'm keeping as a security deposit. I will give you after 60 days. So it again depends on contractual conditions. So due from the factor is what? The amount which you are supposed to get, but right now retained by the factor. The last sentence in the paragraph. Yeah, last sentence. If the returns, discounts, and allowances are less than the retained amount, the balance will be returned to the seller. हाँ तो आप बताओ अब इसकी एंट्री क्या होगी. सो आई एम गिविंग यू अ इसका सिनेरियो मतलब क्या है? आप एंट्री बनाओगे. सो मत- यू आर गोइंग टू अ फैक्टर. आपका अकाउंट्स रिसीवेबल है $5,000 का. It's with recourse, so factor can come back to you for a bad debt. और bad debt होगा तो आपको उसको repay करना पड़ेगा. Now let's say factor has agreed to pay you total $4,000. His commission is 1,000. लेकिन payment terms are like this. So today factor is giving you a 3,000. Factor is retaining $1,000, and actual bad debts are, let's say, $100. So yes, over to you. Sorry, entries up now. So what happens when a factor is recorded, and what happens when a settlement happens?
So your entry is cash debit 3000, due from factor debit 1000, commission 1000 to accounts receivable. Perfect. Now on the settlement, what will be the entry? आपको फैक्टर से मिलना है 1000, however there is a actual bad debt 100, तो आपको उसको compensate करना पड़ेगा. So how much money you are actually receiving now from the factor? So $900 you are actually receiving from the factor. What is your bad debt expense loss? This is your $100, which is actual bad debt. How much was due from the factor? It was $1000. So this is credited. So what happened here? Factor ने आपके पास $1000 retain किए थे. Factor released only $900. So what is the meaning of this line? If there are returns, discount, allowances, bad debt, which are there, which are less than the retained amount, the balance will be paid back by factor to the seller. So in our case, factor had retained $1000. It deducted $100 for the returns or bad debts or allowances, and remaining $900 are paid back to the seller of the accounts receivable. Clear है last line? Why is the factor deducting that they didn't get the money? Factor is deducting because it's a with recourse. So if there is an actual bad debt, then we have to compensate to the factor. So what we have agreed with recourse, we will repay to the factor. So either factor आपको पहले 1000 पूरा दे और आप एक और transaction करो 100 का outflow का, or you do a net transaction where factor will pay you a net $900 only. Clear है entries? Hmm. Yes, no, कहाँ पर confusion है? Okay. चलिए, let's move to the last topic now, which is the notes receivable. So notes receivable, it's again exactly the same as your factoring. यहाँ पर क्या होता है? Instead there is a factor, there is a customer who gives you a promissory note. Promissory note में customer क्या बोलता है कि I am supposed to pay you a $1000 after 30 days, and I am giving you a promissory note right now that I promises to pay you a $1000 after 30 days, and he hands over a one legal document to you. Now you have a $1000 receivable after 30 days, but you need a money today. So you go to the bank or you go to any company or a third party, and you say that I want to sell my notes receivable. So notes receivable is exactly the same concept as what we saw in factoring. Now, notes receivable mein, let's say you go to a Bank of America. Bank of America is giving you a cash today. They say, I'm going to give you $900. $100 is my income, and I will retain this notes receivable of $1000. After 30 days, your customer will pay $1000 to me. Now, again, the notes receivable can be with recourse or without recourse. So, with recourse, it means the holder, the person, it's remain the liable. Exactly the same concept which we saw during the factor with recourse and without recourse. With recourse means they can come back if there is a risk of bad debt. Without recourse, they cannot come back. If all the entries remains the same, instead of accounts receivable, now you credit a notes receivable, which is your another current asset. All concepts are same, all theoretical topic are same. एक बार सेक्शन 2 को रीड कर लो, कोई भी लाइन में डाउट हो तो मेरे को पूछो, अदरवाइज वी कैन गो टू अ एग्जांपल नंबर 6. How is the notes? What's a note receivable? नोट रिसीवेबल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. इट्स जस्ट लाइक योर कैश. आपके पास करेंसी नोट्स नहीं है, उसकी जगह पर एक लीगल पेपर है वेयर कस्टमर हैज प्रॉमिस्ड यू. सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक अकाउंट्स रिसीवेबल था. लेट्स से यू हैड अ वन अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ $1000. Can you Customer not? has given you a note now, a note of $1000. Your entry is notes receivable debit $1000 to accounts receivable $1000. So now instead you have accounts receivable, you have a notes receivable in your balance sheet. Detail concept आपने आपके बीकॉम में पढ़े होंगे where you have a bills of exchange, what is called a promissory note,
what is called a discounted bills, what is a bills Yeah. receivable. So all this concept you should have done in your graduation. And this is the entry जब customer आपको पैसे की जगह एक contract देता है where he promises you to pay a money in the future date. It is called a notes receivable. Your journal entry is notes receivable debit और आप आपका accounts receivable close कर देते हो. So now in your balance sheet you only have a notes receivable जिसके सामने आपको पैसा मिलेगा. या तो कस्टमर डायरेक्टली आपको पैसा करेगा, या तो आप जैसे आपने अकाउंट्स रिसीवेबल को फैक्टर किया था आप आपका नोट्स रिसीवेबल भी फैक्टर कर सकते हो, सेम विथ रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड्स. Can you undo the sheet? Otherwise, I'll lose all the entries. अंडू क्यों चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझना है ना, व्हाई यू लेकिन वांट टू एंट्रीज मैं कहाँ से देखूंगा? प्रीवियस ऑल द रिकॉर्ड. एंट्रीज. खुद बना सकते हो ना, वी हैव डन ए इज इक्वल टू सी प्लस एल. आप खुद बना सकते हो ना एंट्रीज. चलिए ठीक है, आई हैव डन फॉर यू. एक बार आप लॉजिक्स देख लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 6. आप ट्राई करो एग्जांपल 6 को भी सॉल्व करने का. इफ नॉट देन आई कैन हेल्प यू. और आपके बुक में जो भी एडिशनल एग्जांपल है एआर के, एक बार मुझे भेज देना. सो आई सी दैट टुडे, एंड कल हम उनको सॉल्व करेंगे. एंड देन नेक्स्ट 2 days वी हैव इन्वेंट्री. इन्वेंट्री थोड़ा फ्रेश लेकर आना, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक and we will try to get it over by Friday session. So 2 session for sure for inventory. Promissory note to the valuation, the third paragraph. Sorry, come again. Notes receivable, the valuation heading, the third paragraph. With recourse. No, no. Also, if the promissory note, the second paragraph in yours. Also, if the promissory note is a non-interest bearing or interest rate is the below market rate, the value of the note should be determined by the imputed market rate. इसको छोड़ दो, एक बार हम बॉन्ड करेंगे ना, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट पे आएंगे. राइट नाउ यू जस्ट अज्यूम कि जो नोट देगा उसके ऊपर वो कुछ इंटरेस्ट देगा. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोट? आई थिंक आई नीड टू टेल यू दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट. आपका जब अकाउंट्स रिसीवेबल ड्यू होता है, इफ कस्टमर कैन नॉट पे यू द मनी ऑन दैट डेट, तो वो नोट्स देता है आपको, नोट्स रिसीवेबल. सो ओरिजिनली कस्टमर का ड्यू डेट था 30 days का. नाउ कस्टमर इज गिविंग यू अनदर 90 days ऑफ नोट्स. मतलब कस्टमर को जो पैसा 30 दिन में देना था, ही इज नाउ गिविंग यू आफ्टर 120 days. हाउ 120 days? 30 days ओरिजिनल ड्यू डेट प्लस 90 days का
नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल की वजह से वो जो टाइम बाय कर रहा है टू डिले द पेमेंट, उसके ऊपर जनरली वो इंटरेस्ट देता है। सो योर नोट्स रिसीवेबल कैन बी 10% इंटरेस्ट बेयरिंग, 5% इंटरेस्ट बेयरिंग। सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर वो जो इंटरेस्ट रेट है नोट्स रिसीवेबल पे, इफ दैट इज द बिलो मार्केट रेट, इन दैट सिचुएशन आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या? वी हैव टू लर्न द बॉन्ड अकाउंटिंग फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इम्प्यूटेड मार्केट रेट, उसके बाद ये टॉपिक पे आएंगे। राइट नाउ इग्नोर करो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्विकली। सो अ जॉर्डन कॉर्पोरेशन has a $40,000 90-day note from the customer dated 30th September year 3 due on 30th December। तो कस्टमर ने एक नोट्स दे दी $40,000 की 30th सितंबर को, जिसकी मेच्योरिटी है 30th दिसंबर को, एंड इट हैज अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। नाउ आपको पैसा जल्दी चाहिए था, सो ऑन 30th अक्टूबर, दैट इज आफ्टर 30 days ऑफ इश्यू, बट स्टिल 60 days टू गो फॉर मेच्योरिटी। You go to the bank and you discounted this for a 15%। अब why 15%? जब पैसा मिलेगा ऑन 30th दिसंबर, आपको कितना पैसा मिलेगा? अगर आप वेट करते पूरा का पूरा 30th दिसंबर का, तो आपको $40,000 प्रिंसिपल मिलता, प्लस आपको $1,200 का इंटरेस्ट मिलता। हाउ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड? $40,000 एट 12% पर एनम इंटू 90/360, तो आपको पैसा मिलता 41,200 का। तो आप बैंक के पास ये नोट लेकर गए, बैंक को पता है कि उसको मेच्योरिटी पे 41,200 मिलने वाला है, बट बैंक ने क्या बोला कि आई एम गोइंग टू अर्न 15% ऑन दिस, मैं आपको 15% डिस्काउंट करके आज के दिन पे पैसा दे सकता हूँ। सो आउट ऑफ 41,200 में $1,030 अपने पास रिटेन करूंगा एज द कमीशन इनकम, एंड आई कैन पे यू 40,170 टूडे इफ यू रिक्वायर। अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यस आई एम ओके, आप मुझे अभी 4170 दे दो, ये रहा नोट्स रिसीवेबल, ये अब आपका हुआ, कस्टमर विल पे यू डायरेक्टली 41,200 ऑन मेच्योरिटी। सो आपको पैसा कितना मिला? 40,170। आपको रिसीवेबल कितना था? 40,000। तो 170 जो आपको मिला, दैट इज द इंटरेस्ट यू अर्न बिकॉज यू वेटेड 30 days from September 30 to October 30 period, which is your interest income. Notes receivable no longer remains in your balance sheet, it is off the balance sheet now because वो अब बैंक के पास चला गया है। It is the asset for the bank. The the 12% is what we earned or what we would have earned. We would have earned if you would have waited till 30th December, and customer would have paid you 40,000 principal plus 12% per annum interest, which comes to $1,200. So if you would have waited for full 90 days, then customer would have paid you $41,200. And and the 15% is being 15% discount is going to be multiplied to what amount? 15% is retained by the bank. So बैंक क्या बोल रहा है कि मुझे तो 30th दिसंबर को पैसा मिलेगा 41,200 now from the customer, but I want to earn a 15% on this। तो मैं कितने दिन आपको जल्दी पैसा दे रहा हूँ? 60 days। So for 60 days period, bank is earning a 15% interest on this। So 41,200 it's receivable for the bank, into 15% they want to earn for how many days? 1st October से लेके 31st of December, which is 60 days out of the entire year। So they are going to earn further 1030 from us। 60 बैंक, days कौन सा 60 days? आपने नोट्स कब डिस्काउंट किया? 30th अक्टूबर को। तो बैंक को नोट कब मिला? 30th अक्टूबर को। बैंक को पैसा कब मिलने वाला है? 31st दिसंबर को। तो बैंक कितने दिन जल्दी पैसा दे रहा है आपको? बैंक इज गिविंग यू 30th अक्टूबर से 30th दिसंबर, 60 डेज आपको जल्दी पैसा दे रहा है। कस्टमर बैंक को कब पैसा देगा? 60 डेज के बाद पैसा देगा। तो ये 60 डेज के लिए बैंक 15% डिस्काउंट अभी अर्न कर रहा है हमारे से। तो अल्टीमेटली बैंक कितना ओवरऑल अर्न कर रहा है? $1,200 कस्टमर से अर्न करेगा थ्रू द इंटरेस्ट, एंड फ्रॉम अस $1,030।
So overall bank is going to earn around $2,230 from the entire transaction. And what does discount mean? Discount mean? Because I had this problem before. How does discount work? डिस्काउंट का मतलब इंटरेस्ट होता है ना, कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि सात तुम मुझे पैसा दोगे 30 जून को 1000, मैं बोलूंगा यार 30 जून तक रुकना नहीं है, आप मुझे आज पैसा दे दो, तो यू आर सेइंग कि मैं 950 दूंगा, तो $50 का जो डिफरेंस है दैट्स अ डिस्काउंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप जितना पैसा जल्दी दोगे उतना कम दोगे, तो दैट्स अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल की 41,200 आफ्टर 60 days, मे बी ओनली 40,800 टुडे, सो वो $200 का जो डिफरेंस है दैट्स अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट्स द डिस्काउंटिंग। Okay. ठीक है, ऑल क्लियर। स्मॉल टॉपिक स्लाइड्स पे एक बार वापस आता है, सो आई थिंक ऑल दिस सेम टॉपिक 3 slides. We started with the basic 2% net and gross method, net method. We saw the allowances calculation, and lastly we saw pledging, factoring, and notes receivable. So this ends your accounts receivable topic. बहुत small topic है, not very heavily tested in the exam. आपके बुक के additional topics जो है with example आप मुझे भेज देना, so we will do that tomorrow first, and then once we come back tomorrow we are going to start with your inventory chapter. Inventory heavy topic रहेगा, complicated topic, so come with a fresh mind. आपको बहुत ज्यादा drain out feel होगा after inventory session. Uh, ठीक है, I'll see you tomorrow then. Thank you.